दोस्तों आज मैं आया हूँ Telesin T10 रिमोट लेकर. This is the best remote for GoPro. I'm going to give you a review on this remote. ये मैं GoPro 10 के लिए लेके आया था. So this is my GoPro. So let's do some testing on this remote. Is it worth? So I think I paid about $25. I think on the Telesin website it's about $30, but I think मैं अच्छी डील मिली मुझे शायद eBay में, तो I got it for $25. So it's pretty great. It's compared to original remote from the क्या कहते हैं like ओके सो खुल गया. सो इट्स जो ओरिजिनल जो GoPro का जो रिमोट है विच इज़ लाइक $79 प्लस टैक्स विच कम्स अबाउट $95. तो compared to that I thought कि why don't we just buy a cheaper one if it's gonna work the same way. But actually in general it's a very good इसका जो information जो था it's बढ़िया था. So in this box मैं देख पा रहा हूँ like I see a remote here. It looks like there is some box. यहाँ पे कोई box है. So let's open this box. इसके अंदर क्या है? So looks like a tag रखे हुआ है, sleeve tag. Pretty cool. That to your wrist. There is a cable दोस्तों यहाँ पर. Also a cable है, which is kind of a magnetic pin type का. And yeah, pretty much. And there's a manual. Looks like in multi. Let's open the remote अभी. So look wise में थोड़ा बहुत थोड़ा लग रहा है बड़ा, but मुझे तो बिल्कुल perfect दिख रहा है. And this is water resistant दोस्तों. पानी में अगर वगैरह भी जाता है तो it should be here. So मैं निकाल दिया हूँ sticker. So let's see if I can turn it on. Is there any battery? यहाँ पे 4 बटन है. One is power on, setting, and there is some recording button, and then some favorite start button है. So let's see if this has a battery. Okay, looks like it comes with some battery. So I think I'm all set to. So as soon as I turn it on, मैं on करने के time पर वो Bluetooth का sign आ रहा है इस पे, if you can see. So अभी मैं GoPro turn on करूँगा, and then to see, I think I had another cable. So let's go to the menu and then slide connections. मैं जा रहा हूँ connections in this. इसके बाद मैं जा रहा हूँ wireless connection. And then once you go to the connect device, there is an option called remote. So I'm just clicking on remote. Once it's clicking on remote, it's automatically connected. So it says connection successfully, and it's pretty straightforward. As soon as मैं कि zero image मतलब जो set up annually. Okay, so यहाँ पर जो है ना मैं देख पा रहा हूँ कि GoPro पर मैं there are like power on, power off है. So obviously if you can power off, it will automatically turn it off the GoPro, which is very good. That's it. ये मैंने off कर दिया है. So technically you can connect. आप लोग 4-5 devices connect करते हैं, but operating time पे you can only operate one device. But as if now I only have one, so I'm just showing you with one GoPro. So let's turn it on and then look at other features. One of the important feature in this remote, they say that कि ये remote like about 80 feet तक काम करेगा. So I'm going to test that, but like how good the connection is. So मैं first try कर रहा हूँ. There are like ये power button पर 3 settings है. So you can swift. अभी जो है ना मेरा GoPro जो है, it's on the video mode. So as soon as when I press the power button, it turns to the picture mode. So you can see there is an icon change right on the remote, my friends. So icon aa raha hai, and then one more time if you click on, it's like a three functionality, and then this is a time lapse. If you can see here, it's actually showing a live action. So and then if I click back again, it's coming back to the video,
And then if I click, if example, if I on if अगर मैं वीडियो पे रहकर क्लिक करता हूँ रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड हो जाएगा. And then I can stop the recording with the same button, and you can start seeing the live time here. And if you can see, and then I think I just stopped the recording, so it's already showing a count 1, मतलब एक recording हो चुकी है. So similar way, if I can press here again, and then it's gonna have the अभी मैं 5 सेकंड तक record करूँगा, and then I'm gonna click again, and then this is the second recording completed. So technically जो है it will have all counts की कितना recording करे हैं. And then let's go to the picture mode again. So we press the power button here, and then now it's on the picture mode, and then pictures भी मैं ले सकता हूँ directly. So I am taking picture of myself directly यहाँ पर, तो मैं दिख रहा हूँ ना GoPro में, so इसलिए. So now this is the picture, and I click my picture right here. So this is perfect, and then it also tells the picture count. यहाँ पे picture counts कितने हैं. And then let's see what is the next. So when you press the setting button here, this is the setting wala button. So if you can take a look at the camera, it's showing that it's changing the mode. So right now is the night mode, and next जो preset photos वगैरह है ना, like already what is configured on your GoPro, that's what it's gonna show. So right now is on photo, and then it's a live burst right now, and then अभी मैं burst में आया हूँ, and then night mode में आया हूँ. So that's pretty cool function. So you can change anything, and then मतलब जैसा अगर आपने pre configure कर चुका video. So right now I'm in the video setting. So let's check on the video setting. मैं अभी कैमरे को दिखा रहा हूँ आपको. So video settings पे हूँ मैं, and then I'm going to change, press on the setting button. So setting मैंने 1 press किया है, तो right now it's in the active setting, because defaultly there are 4 configurations set on this camera GoPro. So अभी 4, and then cinematic में चले गया है अभी अल्ट्रा स्लो मोशंस पे. एंड देन सो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ, मैं कैमरा जब बाहर कहीं मैग्नेटिक से माउंट से लगा के रखता हूँ, तो मुझे कैमरे को रीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इट्स सो हेल्पफुल, एंड देन इट्स अ वाटर प्रूफ, और इसकी बैटरी की ऑसम लाइफ स्पैन है. इट्स लाइक अबाउट 10 आवर्स दोस्तों. And it can another device, so you can just hold on to the power button. इसका जो power button है, and then I think once I want to connect this, so मैं power button पे जब hold करता हूँ, तो it will start blinking for another Bluetooth. So you are ready to connect for another device. So as if now I'm not connecting another device, but अभी मैं आप लोगों को quickly दिखाऊंगा कि how active this remote is from the distance. So लगभग मेरे पास 80 फीट का डिस्टेंस है यहाँ पर, तो मैं अभी ट्राई करूँगा, एंड इट विल शो मी लाइक कैसे मुझे इसमें दिखाई देगा. सो मैं अभी लेट्स गो आउटडोर एंड देन फिगर आउट अबाउट दिस डिस्टेंस वाइज हाउ एक्यूरेट. एंड बिफोर वी गो दोस्तों, इसका जो दैट दिस इज़ ऑसम फीचर. सो इस पे जो है ना मैग्नेटिक के मैग्नेट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे चार्जर पे. इट्स काइंड ऑफ मेक श्योर करना कि ये चार्जर रखें आप, एंड देन बिकॉज इट्स काइंड ऑफ unique charger. It's not just like a regular USB. It would have been better if there was a USB charger, but overall I would say, like, I will give like 9 out of 10 this for this remote for this price. And it can be is compatible with 7, I think 8, 9 and 10, and I didn't know कि 11 को अभी compatible है नहीं है, but when 11 GoPro 11 is in the market, when I get it I'm gonna test again with the GoPro 11. So this magnetic का जो है ना, मैं अगर इसको ये automatically stick हो जाता है, so that's pretty awesome. And another thing is, like, if I try to interconnect like opposite connection, it will like वो पलट जाएगा, like repel हो जाएगा. So that's awesome. So the good thing is, like, ये जो है it says that कि जब आप connection लगा के रखें, तो ये make sure करें कि not to try to connect these connectors each other. So क्योंकि ये जो है ना, maybe it has some circuit or something, so that's why it's kind of uh, so दोस्तों मैं अभी आउटडोर आ चुका हूँ. सो लेट्स डू द टेस्ट फॉर द डिस्टेंस. मैं यहाँ से 40 फीट जाकर पहले टर्न ऑन करूँगा. So let me just walk, and I'm also counting the steps.
तो मैं जस्ट 40 पे आऊँगा तो तब रुक जाऊँगा एंड देन द सेकंड टेस्ट वी विल डू वाज लाइक 80। तो अभी मैं 40 फीट पर आ चुका हूँ स्ट्रेट डिस्टेंस पर, नो ऑब्स्ट्रक्शंस। लेट मी जस्ट टर्न ऑन द कैमरा नाउ। सो अभी जो कैमरा है बिल्कुल 5 4 3 2 1 दैट्स इट, इमीडिएट रिस्पॉन्स से ऑन हो चुका है। And then I will just try to turn it off, stop the recording and turn it off. I'll just let it run for like 10 seconds. So अभी मैं immediately off हो चुका है camera without any issue at all. Let's walk further 40 feet distance. um, so now I'm at the 80 feet distance पे, अभी थोड़ा है, अभी 10 कदम। ओके सो लग रहा है कि मैं 80 फीट पर आकर टर्न ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई डोंट सी रिमोट तो ऑन हो रहा है, बट वो जस्ट सर्चिंग मोड पर है। मैं ट्राई टू अचीव द कनेक्शन बट कनेक्शन लुक्स लाइक वीक। मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा, मे बी इट्स गोना गिव अ थोड़ी देर बाद शायद कनेक्ट होगा, बट at this point it's not connecting. So let me just move forward to closer a little bit. So I'll just let you know like कि मैं कितने steps में 10-15 मेरा plan है कि 50 to 60 के बीच में I'll give a shot। अगर उतना भी अगर काम करता है तो that's pretty good। So मैं आ चुका हूँ, yep। So 55 feet पर perfectly on हो चुका है without any issue। So that's awesome। So let me just come closer and then give a conclusion that कि 50-60 feet पर it's awesome है, it's not a problem at all। So that's pretty good। मैं 80 तो expect कर, I mean I was not hoping, but it's okay। I think it's still not bad। Yeah, like you know clear। maybe शायद ये building वगैरह की वजह से शायद ये थोड़ा बहुत influence interference हुआ होगा, but this is pretty good। Almost 50 feet तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। दिस इज़ अ स्ट्रेट रोड, लेकिन इफ़ आई गो लाइक 50-60 फीट के बाद आई थिंक ब्लूटूथ इज़ ट्राइंग टू ज़रा स्ट्रगल करने के जैसा मुझे लगा। सो ओवरऑल इट्स गुड एक्चुअली। 50 फीट इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस एंड टेक्निकली इफ़ यू आर इन अ ओपन एरिया, मैं ज़रा जस्ट रेजिडेंशियल एरिया में हूँ। So let's get back to the stop position now। Stop this video and then you can directly turn it off। So maybe let me just share you the another feature here। Once you turn off the device, okay, so मैं अभी off कर चुका हूँ, and then let's try one more thing, if we can directly start the recording। No। So दोस्तों that is one of the defect here। like you know usually we can directly press the record button on the GoPro and it will activate the recording with the default video setting, but in this case I have to turn it on to start the recording। So that is the only thing you need to be concerned about, but apart from that it's overall it's a good camera। Alright दोस्तों, I'll get back to you। मिनट के लिए चार्ज करना चाह रहा हूँ बिफोर आई कुड शो यू द डेमो फॉर दैट। एंड लुक एट दिस स्ट्रैप हियर। ये जो स्ट्रैप जो है इट्स प्रीटी कूल, आई लाइक इट। सो इस पर थोड़ा ट्रिकी है, देयर इज़ अ वेलक्रो का वो रखे हुआ है इसमें। सो एज सुन एज यू आर मोर फेमिलियर विद द this band, okay, so there we go दोस्तों। Sorry, it just took a while, but look at this, it's awesome, it's cool, like you know I really like this strap which is more like hands free, तो मुझे अभी पकड़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, and it gives you all information। and the battery 10 hours, you know, when the each battery if you continuously record on 4K it's about an hour। so in that case that means you can have a 10 batteries का backup तक का आप use कर सकते हैं। सो दोस्तों आई हैव द अदर रिमोट रेडी। सो मैं अभी आपको वो दिखाना चाह रहा था चार्जिंग। सो द वन ऑफ द प्रॉब्लम आई फेस्ड, अभी मैं ये जो है ना मेरा पुराना रिमोट है। सो पुराने रिमोट में थे आई फाउंड अ इश्यू। I try to reach the seller, they send me a replacement, but the thing is like you know just be aware of this issue। So the issue is even देखिए अभी मैं चार्जिंग निकाल चुका हूँ,
लेकिन अभी भी वो बता रहा है कि चार्जिंग पे है. एंड you can see that there are connectors which are unconnected, and technically is supposed to be in a normal mode. If you look at this remote, let me just turn it on. Remote says normal, and this remote says charging, and that was the issue I found. But मैं यूज़ कर पा रहा था, बट द थिंग इज दिस वाज द इश्यू. चार्जिंग बोल कर आ रहा था, एंड व्हाट इट डज, इट्स नॉट टर्निंग ऑफ एट ऑल. इट जस्ट किलिंग. ये ऑफ कभी नहीं होगा. ये अभी ऑफ में करूँगा तो वो फिर से चार्जिंग बोल के आएगा. सो दिस वाज द इश्यू आई फाउंड इन वन ऑफ द Telesin remote, so smart remote. But overall I give a good number of like 9 points. This was the only defect part, so I mean this is fine. But if you, for the purpose of your